अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक क्विकली एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाउ आई वर्क एंड हाउ आई फाइंड एम्बिग्यूटीज, ठीक है। सो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट मैं मिल गई, मैंने देख लिया, सुन लिया। इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स इंट्यूशन। आपको आपकी एक्सपर्टीज या आपका एक्सपीरियंस जो है वो ये अम, इशारा देता है कि बेसिकली इस चीज़ में ये एम्बिग्यूटी है। देन यू ट्राई टू फाइंड आउट हाउ आई विल डू इट। आई यूजली डू इट, आई विल डू इट राइट नाउ टू शो यू। अच्छा, ये एक रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है ऑफ फ्रॉम लॉरेंस फोन, मीन्स के नंबर हैज़ बीन डायल्ड, लेकिन सामने से किसी ने उठाया नहीं। जस्ट हेयर इट आउट। ब्लैंक एंड स्टार्ट। सॉरी। ऑलराइट, इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी एम्बिगियस है। तो साउंड पीछे से आ रहा है, मीन्स कि लग रहा है जैसे हवा है। शायद आप लोगों को उस तरह से सुनाई ना दे। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये दिखाने के लिए बेसिकली ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। ये हवा है। तो मुझे बेसिकली एक साउंड आया बैकग्राउंड से कि सम सॉर्ट ऑफ साउंड इज कमिंग, सो आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली क्लियर दिस साउंड, ताकि मुझे वो समझ में आए कि वो साउंड है किस चीज़ का। मैं ब्लैंक स्पेस को सबसे पहले रिमूव कर दूँगा। ओके, ये जो साउंड है, ये साउंड जो आ रहा है, ये साउंड है टेलीफोन के रिंग का। Okay? So these sounds also I'm going to remove now, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये पूरा इसने कवर किया हुआ है, तो इसको हटा ही नहीं। पहले नहीं निकलेगा। ठीक है जी, ये भी रिमूव हो गया। Right. And last one, ठीक है जी, इसको रिमूव, इसको कम कर दो, रिमूव नहीं करते इसको, जस्ट स्लो रिटर्न। बेसिकली आई थिंक आप मोर साउंड जो साउंड्स हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, या इसको निकाल देते हैं एंड कीप द, ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, लीव इट।
चीज़ है जो बेसिकली जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो दिखाता हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं फिलहाल, बाद में देखूँगा। आई टेक माय टाइम। लेट मी जस्ट मेक इट लो, ताकि सुबह नहीं, और उसमें भी अगर कोई साउंड है किसी किस्म का तो वो भी पता चलेगा। ओके, आई थिंक सो should be fine. Should not have take a pause. Yeah. ठीक है। Now let's listen again. This one. Sound is there. That's it. Okay. Um, Now let's try to enhance the sound और the background, so ताकि हमको समझ में आ सके कि पीछे साउंड किस चीज़ का, हवा का है या देर समथिंग एल्स। सो अभी तक ये मुझे भी कंफर्म नहीं है कि ये हवा है या सम अदर साउंड इज देयर, तो इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो लेट्स फाइंड आउट। ये साउंड इसको ग्रीन करें, इसको लाइट करें। That's good. It is काफ़ी साउंड है। ग्रीन फोकस करें, लाइटनेस फोकस करें। क्या बात है। इसको भी okay. Yes. Yes. Like, right. So आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये ओपन हुई थी स्क्रीन, at that time the sound was not there, means के it was not even hearable, तो वो हल्की सी एक आवाज़ थी। Now it is there in the waveform. The sound is there actually. And let's find out what the sound is about. अभी तो आवाज़ शायद इतनी क्लियर ना हो, लेकिन try.
नहीं कि आवाज़ लग रहा है जैसे कुछ सरगोशी में बात कर रहे हैं। तो देर इज़ एन एम्बिग्यूटी फाउंड इन दिस रिकॉर्डिंग दैट देर इज़ समथिंग, कोई ऐसा साउंड है जो साउंड यूजुअल नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट साउंड है क्या। लेट्स ट्राई टू क्लियर इट एज मच एज पॉसिबल। लेट्स ट्राई टू हेयर इट आउट, सरगोशी में क्या बोला गया। लेट्स ट्राई इट। ओके, पहले तो हम इसकी इसमें जो शोर है पहले उसको हम खत्म करें। थोड़ा 2 सेकंड, 2 मिनट लेगा सर, भी हो सकता है प्रोसेस करना है, थोड़ा टाइम लेता है। तो ये टूल बेसिकली मैं खुद भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने रेफरेंस के लिए, और साथ में उसको भी लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर रहा हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ। जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें से कैसे एम्बिग्यूटीज़ निकलती हैं। रिकॉर्डिंग्स नॉर्मली वैसे उसके अंदर एम्बिग्यूटी पकड़ना आसान नहीं होता। अगर कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ हो रही है, किसी किस्म का कोई बात है ऐसी बैकग्राउंड में जो कि आपकी नोटिस में आनी चाहिए, तो इट्स बहुत मुश्किल होता है इसके आप उसके उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। वॉइस को होता है, आप चाहे आपने कोई अच्छा हेडफोन लगाया हो, इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास अच्छे इक्विपमेंट है, अच्छा हेडफोन लगाया हुआ है, अच्छा साउंड सिस्टम, या अच्छा आपके पास सॉफ्टवेयर है जो उसको रन कर रहा है, देन ऑल दोज थिंग्स कंट्रीब्यूट। राइट नाउ अभी हमारे पास कोई हेडफोन वगैरह नहीं है, वी आर यूजिंग द जो इसके लैपटॉप के स्पीकर हम इसी के पे कर रहे हैं, लेकिन वन वे अदर वे साउंड क्लियर समझ में आना चाहिए, मुझे ये पता चलना चाहिए आवाज़ है किस तरह की। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब मैंने उसका जो रसल था, मैं वो कम करनी थी, उसमें जो घबराहट थी, उसके अंदर जो सुरसराहट की आवाज़ है उसको मैंने कम किया है। अब देखते हैं कि इसकी इसकी साउंड क्या बनी है। यहाँ पर इस जगह पर कुछ साउंड है, ये पूरा एरिया इम्पोर्टेंट है, पूरा एरिया इम्पोर्टेंट है। इसको म्यूट करो, बीच में साउंड आ रहा है, इसको कंटिन्यूटी है। यहाँ से साउंड फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ तक का साउंड लेते हैं जो कि मुझे जिसमें ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जो आवाज़ें सुन जा सकती हैं, तो वो यहाँ है इस एरिया में। राइट, इसको हम क्लियर करने के लिए नॉर्मल की आवाज़ है। नॉर्मल का फ़ोन है, और ऑफकोर्स नॉर्मल का फ़ोन है तो
चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। उसके बाद चल के अब इस साउंड को फाइंड करते हैं, साउंड है कितना, जो साउंड है ना, अच्छा टू फाइंड आउट क्योंकि ये साउंड को फाइंड करना पड़ता है। द मसला let's take this from here. Yes, yes, baby. I got you. अरे तो बातचीत है यार। ओह वाह, तो
लेट्स ट्राई वन थिंग मोर। ये तो ठीक है अभी आवाज़ तो उसमें पकड़ी गई है, पता चल गया कि आवाज़ है, लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए कुछ और टूल यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो बीच में कॉल है, तो जो हमने डिलीट किया है पोर्शन, अगर कि उसमें एक्चुअली कुछ डेटा निकालना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन फिर वही हमने उसको डिलीट किया, उसकी वजह से तो एक हल्का सा गैप सा है, जिसकी वजह से सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो वो साउंड उभर नहीं पा रहा है। आप लोगों को सिर्फ ये शेयर करना था कि जस्ट वांटेड टू शो यू कि only this recording, less than 15-20 seconds recording, can take my entire day to actually bring something understandable. तो अगर किसी में मुझे कहीं पे डाउट होता है या मुझे कोई किसी किस्म का एम्बिग्यूटी कोई नज़र आती है, सुनाई देती है, समझ में आती है कि देयर मे बी समथिंग, क्योंकि जितनी भी रिकॉर्डिंग हैं सब में जो एम्बिग्यूटीज़ हैं जो आइडेंटिफाई हुई हैं वो बैकग्राउंड साउंड है। बैकग्राउंड साउंड को इन्हेंस करना, उसको उसको अलग करना, उसके बाद उसको क्लीन करके उसके यानी कि जो उसमें उसके आसपास के जो साउंड्स हैं, जो जैसे अम, अम, इसके हवा का साउंड है या इसकी ब्रेथ का जो आपकी सांस होती है उसका साउंड है, या वैसे दूसरे और साउंड जो घबराहट वाले साउंड होते हैं, इसकी वजह से जो वोकल होता है वो दब जाता है। तो अल्टीमेटली घबराहट जो जो साउंड होते हैं पहले उनको ख़त्म किया जाता है, तो जो इस कदर सफाई के साथ ये जो बैकग्राउंड के अंदर जो वोकल है, जो अगर किसी ने बात की है, कुछ बोला है, या अगर किसी ने कोई विस्परिंग की है, तो वोकल प्रिजर्व रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये जूम करके हम पिक्सल लेवल के ऊपर गो टू द पिक्सल लेवल एंड देन वर्क है। ये देखें बेसिकली जो आवाज़ें हैं बेसिकली वो ये पिक्सल लेवल के ऊपर। अब यहाँ से आइडेंटिफाई करके चीज़ों को उठा के या डिलीट करके या चीज़ों को फर्दर इन्हांस करके, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग थिंग ऑफ कोर्स। Just wanted to share this. I will be sharing more, but right now this is good enough to just to let you know how ambiguities are formed, and then by use of such advanced forensic tools, we can actually find the, क्योंकि मैं दोबारा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, just to make sure it is recorded properly. Let me show you again something. By the way, this right now this broadcast is streamed on 15 channels, including YouTube, including Facebook, including Twitter, including now, and I mean a whole, including um, um, Twitch, and all the major channels of live streaming actually. This is being streamed live right now on all those 15 channels. There are 7,000, nearly 7,000 subscribers, um, and इसके अलावा basically there are many ways to spread it, means कि by using social media tools, by using recording हो जाती है, जब एक स्ट्रीमिंग कंप्लीट होती है तो उसको बेसिकली हाउ तो उसको टुकड़ों में तोड़ के एक घंटे की रिकॉर्डिंग को आपने 5-5 मिनट के वीडियोस में तोड़ के, एंड देन यू जस्ट
तो इसके बहुत सारे तरीके हैं टू एक्चुअली मेक इट अफेक्टिव, जो लोग हैं वो सुन सकें। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 2-2 घंटे की बात सुने, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 700-700 600 पेज पढ़े, या मैं बोलता हूँ 70 पेज भी पढ़े, किसी के पास टाइम नहीं है। To make it more effective, actually, I'm using tools to spread my words, spread my um, story as far as I can. um, तो एक क्विकली सिर्फ एक चीज़ आपको दिखा के एंड देन आई जस्ट साइन ऑफ। वी आर वर्किंग ऑन दिस, देयर आर मैनी सेटिंग्स एक्चुअली जो मैंने नहीं की उस वक्त, आई शुड हैव डन, जो मैं अभी अभी ट्राई करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ साउंड, एक साउंड यहाँ मिला, ये साउंड यहाँ मिला है। Oh my god. Oh my. Oh my god. Oh my. Listen. Listen to this shit. इसको बोलते हैं ये, look how the sound is saved मुख्तलिफ पोजिशंस पे। ये देखो, I am right now searching the sound. That's beautiful. Oh my god. I found one more sound.
खैर, इट इज़ ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग थिंग। आपको देख के जो इसको देखेंगे इस वीडियो को, इस क्लिप को, दे विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ वर्क that takes hours and hours and hours and hours of time, but it is very creative work। ये बहुत क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू फाइंड द साउंड। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई है, इसका एक टूल दिखाया। दे आर 30-35 टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। उसके हिसाब से मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके, मुख्तलिफ सेटिंग्स करके, एंड देन अल्टीमेटली साउंड को इस लेवल तक क्लियर किया जाए कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब जो चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, आपने एक दफ़ा रिकॉर्डिंग सुनी। एंड इफ़ यू वांट, मैं आपको दोबारा से एक चीज़ दिखाता हूँ। जस्ट क्विकली लेट मी ब्रिंग इट बैक टू द इनिशियल स्टेट। ठीक है, ओके, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट। ओके, उसके बाद जो हमने चेंजेस किए उसमें, उस चेंजेस करने के बाद टिल द लास्ट से थोड़ा सा पहले मैं अगर ले गया हूँ, तो हमने यहाँ तक लेकर आए। अब यहाँ पर सुने इसको, ठीक है। स्टॉप, दोबारा गोइंग बैक टू द इनिशियल स्टेट, प्ले नाउ, प्ले नाउ। Listen to this. This is the original recording. There is no such sound. जो भी है, तो हल्की हल्की सी गड़गड़ाहट सी आ रही पीछे से, जो कि किसी भी चीज़ की हो सकती है। पंखे की हो सकती है, हवा की हो सकती है, सांस की हो सकती है, माहौल की। मतलब तो सिर्फ गड़गड़ाहट से तो बेसिकली एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं होती, बट देयर इज समथिंग एल्स जो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग इट इज गुड इनफ।